So here in Gujarat, for us the Krishna is very important, my friend. Jai Shri Krishna. This is the example, and this is the idol of the Krishna and the Radha. So this is called Radha Krishna. Some very famous quotes and their sentences in life. बोलते हैं ना उनका पूरा लाइफ का निचोड़ है इसके अंदर ये पढ़ेंगे तो पूरा लाइफ दिस इज द मैप ऑफ गुजरात. So Gujarat, we have all, it's like a small country. For example, in North Gujarat we are there. Here we have 1600 kilometers. उठा के ले नहीं सकते. लीजिए सर. आप ले लीजिए. अच्छा इधर हल्का भी. आइए सर, प्लीज आइए सर. How are you feeling, sir? Gujarat आइए सर, आपको ऑनर टू बी वेरी बिग सर. This is known as Chatha, and Gandhiji believes in khadi. So he used to spin the khadi and prepare clothes with it. And this is the original painting of Gandhiji. And Teach you how to do it. आइए सर. आइए सर. सर इधर बैठ जाइए. नहीं ऐसे नहीं बैठ हो जब का चला वैसा पूरा काम आगे लगी मैं उधर हाँ बोलो बोल है पाचन आप एक फोटो क्लिक कर सके आपण पाचन दे जो बता छोकरा पाचन दे जो ये फूल दे के फूल है सर कॉटन मतलब बिछाना वी मैंने क्या लिखा सर यस सर वाह सर आप तो जल्दी सीख गए हैं हाँ गो वाले जल्दी सीख गए ऐसा दो ये नесколько не надо то ну боюсь это वाह सर इसमें से कीमत नहीं लगती सर किस तरह गांधी आपके सुन Now, I would like to request Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta to kindly felicitate the guest of honor, Honorable Member of Parliament, Sri Jamyang Singh Namgyal. Good afternoon to all. Jule and Jai Shri Krishna. It's a matter of great pride and honor
for the University of Ladakh and all the family members of the University of Ladakh to host the members and the delegation from the University of Gujarat for these few days. Actually, in 2021, University of Ladakh, under the abled leadership and the visionary leadership of our Vice Chancellor, had an MOU with Gujarat University, where under we have been taking student exchange program, cultural programs, and academics and research programs. And the present visit from the visit of delegation from Gujarat University is one such step. I must say that in December 2021, our cultural troupe from University of Ladakh visited Gujarat University, and we had a grand program in the Gujarat University over there, which was appreciated by one and all. I must here mention our gratitude to Honorable Vice Chancellor of Gujarat University, Professor Himanshu Pandya, under whose leadership all these programs have matured. The largest university of Gujarat, we are the only university which is having 6 centers of excellence, 4 incubators, 1 research park, 2 finishing schools, more than 350 startups, 4 lakh plus students, and more importantly, in last 75 years of history, Gujarat University created unparalleled footprints on the history of the country, on the social, economic, political history of modern India. By developing Rashtra Purush such as Dr. Vikram Sarabhai, Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. So on behalf of Gujarat University, Honorable Vice Chancellor, Executive Council, Academic Council, Advisory Committee of IIS, we would like to welcome the chief guest of the event, Advocate Tahisi Kylson, Honorable Chief Executive of Council Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause with the claps. Under his leadership, Leh is touching the heights of development, whether it is the development of new airport, or development of upcoming solar park, or development of this university. Today, Ladakh is not just known because of its natural beauty, or its well known worldwide as land of high passage, but there is a one person who brought all the different side of Ladakh in front of all the Indians. I heartily welcome all of you to this beautiful campus, although partially built, but certainly I think you must have seen that whatever construction is there, it is quite reasonably beautiful. And it's really historic day, I would say, that delegation from University of Ladakh, University of Gujarat could make it to come to Ladakh, and University of Ladakh particularly, both Leh and Kargil campuses. And more so, that large delegation of media persons also came. I think this must have been a rare opportunity for us to host the media persons here in the University of Ladakh. Thank you all of you for visiting here and making us proud that we are hosting Gujarat University and the media persons. I would have expected Vice Chancellor Gujarat University also to be here, but I think because of his commitments he could not make it. I had a talk with him. He has promised me that in the near future he will also visit here and participate, see himself
the creation of what we say Gujarat Center in the University of Ladakh. आज के दिन मुझे लगता है एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि गुजरात के धरती ने पूरे भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया। स्वतंत्रता सेनानियों से लेके फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी से लेके भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया, आज़ाद कराया। और इस आज़ादी के खूबसूरत फिजाओं में और दो महापुरुष गुजरात ने देश को दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, माननीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री के रूप में, भारत के युग पुरुष जिसको मैं हमेशा कहता हूं श्री अमित भाई शाह जी, और जिन दोनों ने लद्दाख के पीड़ा को समझा और इस लद्दाख को कश्मीर के चुंगल से आज़ाद करके एक यूनियन टेरिटरी के शेप में लद्दाख के अस्तित्व, लद्दाख के पहचान और साथ ही साथ लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में करता हूं, आप सबका नमन करता हूं। जुले सबसे पहले तो मैं हमारे प्रोफेसर मेहता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आप लोगों ने ये जो कल्चरल एक्सचेंज करने का जो एक निर्णय लिया और एक जो एक MOU का एक जो आपने एक शेप दिया इस पूरे कल्चरल एक्सचेंज को, और किन किन विषयों पे आने वाले दिनों में जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी काम करेंगे, तो मैं आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली हमारे प्रोफेसर मेहता जी का कि जिन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को इनिशिएट किया है। मैं समझता हूँ ये शायद पॉसिबल नहीं था अगर वो खुद जो है इतना दिलचस्पी से नहीं लेते हैं। लद्दाख का जो है हमारे माननीय संसद जी ने भी कहा है, गुजरात के साथ कुछ हमारा एक डिवाइन कनेक्शन मैं समझता हूँ है, और आज तो पक्का हो गया कि 100% हमारा कुछ ना कुछ डिवाइन और स्पिरिचुअल हमारा कनेक्शन है। गुजरात ने एक ऐसे पुरुष को जन्म दिया है जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और एक ऐसा शख्स जिन्होंने जो है अपने कम समय में जो है मेरे ख्याल से पूरे देश का जो है नक्शा बदलने का जो है उन्होंने काम किया है। लद्दाख का भी जो है हमारा लगभग 70 साल का एक स्ट्रगल रहा है कि हमें भी जो है पूरा फुल फ्लैज नेशनल इंटीग्रेशन होना है करके। 70 साल में जो है काफ़ी संघर्ष यहाँ पे हुआ है, काफ़ी लोगों ने जो है अपने जानों के कुर्बानी भी दिया है। एक स्ट्रगल, एक लॉन्ग फॉट हमारा बैटल रहा है। To extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest and Advocate Tashi Gailson sir, Honorable Chief Executive Councillor